टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सॉलिडवर्क्स में इंजन एयर फिल्टर को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉलिडवर्क को ओपन करना है, देन पार्ट, देन ओके। तो हमारे पास न्यू इंटरफेस ओपन होगा। तो हमें सिलेक्ट करना है फ्रंट प्लेन, देन स्केच, select center line, select line, select smart dimensions, 20 millimeter, 50 millimeter, and angle 10 degree. Then select the mirror entities, select this line and mirror about, select this center line, that's better. Then exit the sketch, select the reference plane, front plane, then length is 100 millimeter. Okay. Then select this plane, sketch, normal. Then select the line command, .50 millimeter. .25 millimeter. Select the mirror entities, select this line, and this center line, then OK. Then exit the sketch, select the loft boss base, loft, this point, then OK. Select the circular pattern, this face, select this line, then click the OK button. That's better. Select this plane, select sketch, first of all, like a shell command, features, exit a sketch, shell command, this face and this face, 1 mm, then OK. Select this plane, select the sketch, then OK. Circle, select this point, then OK. Feature, extrude, 70.50 millimeter. Okay.
select front plane, sketch, then again circle, feature extrude, then again 70.50 millimeter, then OK. Then select this face, sketch, then select the circle, mm, features, then extrude, cut the face, then OK. Select the filler command, select this face and select this face, then OK. Then select the material, any one, edit material, close, then select the color, okay, that's better. तो ये था हमारा इंजन एयर फिल्टर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।